Hello everyone, welcome to the syllabus layers. This is our third video in the Political Institutions of India UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. In this video, we will be doing all the previous year questions related to constituent assemblies. So the first question which was asked in June 2015 was, the Constituent Assembly of India comprised of how many members? So the answer for this is 292 members from the governors provinces, या ब्रिटिश प्रोविंसेस भी बोलते हैं इनको, 4 from chief commissioners provinces and 93 from princely states. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक एंड यू शुड रिमेंबर दिस. और आजकल आप देख रहे होंगे जैसे इस बार most of the questions which were asked by UGC NET in the December January examination were extremely factual. ठीक है, so you'll have to remember these type of facts keeping this trend in mind. ठीक है, so the answer for this is the first option. Next, this was asked in June 2015. Who was the chairman of the inaugural session of the Constituent Assembly? So the answer for this is Dr. Sachidanand Sinha. ठीक है, ये वाले जो फैक्ट्स हैं आपको उसमें मिल जाएंगे आराम से. इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत है ना, लक्ष्मीकांत के चैप्टर में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स यू विल फाइंड देयर एंड यू हैव टू do those completely. Apart from this, I have also covered these in my video on this chapter. मैंने एक मैराथन वीडियो बनाया है ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, है ना, उसका एक 6 घंटे का लेक्चर है विच कवर्स द इंटायर यूनिट. I have uploaded on this YouTube channel, so kindly go through it if you want to avoid reading this. ठीक है, so the answer for this is Dr. Sachidanand Sinha. Next, December 2015 का है, in whose description Maulana Azad, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad formed an oligarchy within the Constituent Assembly. ठीक है, तो ओलिगार्की मतलब क्या होता है, मोनोपोली टाइप है, मतलब इन लोगों का ही चलता था बस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बाकी लोग वर साइलेंट स्पेक्टेटर्स. तो ये ऐसे किसने बोला था, दिस वाज सेड बाय ग्रैनवेल ऑस्टन. ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2016 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आर नॉट ट्रू. So firstly, in 6 of the provinces the legislature was, हमें not true बताना है ना, ठीक है, तो true. In 6 of the provinces the legislature was bicameral. देखिए ये सही है, bicameral legislature was brought by Government of India Act और 6 में था bicameral, so this is correct. Next, the Governor General had the power to make permanent acts but not ordinances. So this is wrong. He had both the powers. ठीक है, he had the power to issue ordinances as well. Next, the residuary power of legislation were vested in the central legislature. ये भी गलत है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था. ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल के पास थे रेसिडुअरी पावर्स. ठीक है, so even this is wrong. Next, education as a subject was with the central legislature. So again this is also wrong since education was a provincial subject. ठीक है, provincial subject था वो. Next, separate representation was provided only to the Muslim community. So again this is also wrong. Separate electorates were provided also to women, labor as well as depressed classes. ठीक है, so since we have to find the statements which were not true, so the correct answer for this क्वेश्चन विल बी द थर्ड ऑप्शन, मतलब फर्स्ट के अलावा बाकी सारे अनट्रू स्टेटमेंट्स हैं. नेक्स्ट है जनवरी 2017 का क्वेश्चन है, हु सेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री. द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया. सो दिस इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट विच वाज गिवन बाय ग्रैनवेल ऑस्टन.
ठीक है, ये कोड बेस्ड क्वेश्चन है एंड दीज आर वेरी बिकमिंग वेरी कॉमन इन यूजीसी नेट नाउअडेज, सो ट्राई टू रिमेंबर सच प्रोमिनेंट कोड्स। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2017 का है। अकॉर्डिंग टू होम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन aimed at the tripartite goal of national unity, democracy, and social revolution as three distinct strands interwoven into a seamless web. So, the correct answer, देखिए गलत दिया हुआ है। अगेन द आंसर फॉर दिस इज ग्रैनुल ऑस्टिन। ठीक है, यहाँ पे ग्रैनुल ऑस्टिन आएगा। इट वॉज ही हु हैड गिवन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, सीमलेस वेब ऑफ नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशल रेवोल्यूशन, ये इन्होंने ग्रैनुल ऑस्टिन ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919? प्रोविजन, देखिए हमें नॉट अ फीचर बताना है। प्रोविजन फॉर अ bicameral legislature at the center, ये था। The legislative assembly would have an elected majority and control over the ministers. So this is wrong. ठीक है, because the ministers were not responsible to the legislative assembly. ठीक है, so this is completely wrong. Next, communal representation was not only retained but also extended. This is true. Next, enlarged the electorates both for provinces and imperial legislature. This is also true. So the correct answer for this will be the second option. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2019 का है। Who amongst the following provided a link between the pre and post independence institutional framework to study Indian politics? तो ये मॉरिस जोन्स ने किया था। He had done considerable study on Indian constitution as well as pre-independence India and post-independence India. So the answer for this question is Morris Jones. ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2019 का है। We have to match the following. We have to match the authors with their respective works. ठीक है, सो ग्रैनुअल ऑस्टिन का क्या है? कॉर्नर्स, देखिए उनका वर्क तो नहीं है, उनका या तो उनके कंसेप्ट्स हैं या उनके वर्क्स के नाम दिए हैं। ठीक है, सो ग्रैनुअल ऑस्टिन का क्या आएगा? कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। ठीक है, उन्होंने बुक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, ये बुक का नाम है, उनकी बुक का नाम। सो ए का रहेगा 3। नेक्स्ट, मॉरिस जोन्स ने लिखा था गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है बुक का नाम एंड दिस वाज रिटन बाय मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट, एम.बी. पायले, उन्होंने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है ये, पूरा अच्छे से नहीं है। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है आइवर जेनिंग, उन्होंने लिखी थी some characteristics of Indian Constitution. ठीक है, so this was given by Ivor Jennings. So the correct answer will be this option. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 21 का है। अरेंज द फॉलोइंग इन द chronological order. सो आई विल जस्ट गिव यू द टाइमलाइन। ठीक है, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसाकर, and after that 1920 में Hunter committee had been formed which submitted its report as well. So this was a committee which was formed to study the atrocities which were allegedly had taken place during the Jallianwala Bagh massacre. नेक्स्ट 1922 में हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। उसके बाद में गांधी जी हैड कॉल्ड ऑफ द एनसीएम वॉज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। इसमें वो एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था और ये सब हुआ था। नेक्स्ट है जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, वो नो चेंजर्स वगैरह का आपने पढ़ा, स्वराज से नो चेंजर्स के बारे में पढ़ा होगा। सो दिस इज रिलेटेड टू दैट ऑल्सो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी जो भी मतलब ऑप्शंस यहाँ पूरे दिए नहीं है, बट दिस इज द टाइमलाइन एंड यू शुड आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। नेक्स्ट है 2023 का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
of India as a microcosm in action. So again this was also said by Granville Austin. ठीक है, ज़्यादातर जो भी phrases दिए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को, they are primarily given by Granville Austin. So next question January 25 का है. We have to match the following. So वही ऑथर और उनकी बुक के नेम्स से वी हैव टू मैच देम. सो द फर्स्ट वन इज पॉलिटिक्स एंड एथिक्स. सो दिस इज अ बुक बाय राजीव भार्गव. ठीक है. नेक्स्ट है द इंडियन पार्लियामेंट. दिस इज अ बुक बाय शंकर एंड रॉड्रिग्स. देन वी हैव फेडरल गवर्नमेंट. दिस वाज रिटन बाय केसी बेयर. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन वाज रिटन बाय ग्रैंडल ऑस्टिन. नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 25 का है. Concurrent list of the Indian Constitution have been borrowed from which of the following constitutions? So the answer for this is the Australian Constitution. ठीक है. ये भी बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है. It is mentioned in Lakshmikant as well as I have covered this in my marathon video as well. ठीक है. Normal theory question है ये. Next जनवरी 25 का है. इमरजेंसी पावर रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन से नहीं कहाँ से वी हैव टेकन देम फ्रॉम. सो वी टुक दैट फ्रॉम वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. ठीक है. ये हिटलर के टाइम पे था ये. तो वीमार कॉन्स्टिट्यूशन में it had provided the suspension of fundamental rights during a national emergency and we have also adopted this. Next, so that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful. You can also follow our Telegram channel for any updates and kindly comment on our videos regarding any content suggestions which you may have. Thank you.